Good morning, students. Today we will start with chapter Magnetic Effects of Electric Current, class 10th, chapter number 13. As you all know, there are three effects of electric current. Chemical effect we have studied in class 8th. Heating effect we have studied in chapter electricity, and in this chapter we will study about magnetic effect, that is third effect of electric current. So first of all, we should go through this activity which was performed by scientist Oersted. तो ये जो साइंटिस्ट ऑरेस्टेड थे, इन्होंने प्रूव किया कि whenever इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर मीन्स जिस वायर से करंट फ्लो करता है, दैट इज ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम. तो whenever इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. हमें पता ही है. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हम किसी भी एक नेक्ड वायर से यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और हम अपने गीले हाथ टच करते हैं, तो वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक. दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. बट साइंटिफिकली इसे प्रूव करना पड़ता है. तो ऑरेस्टेड ने कहा कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. तो उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने ये एक सर्किट बनाया. दिस इज इलेक्ट्रिक वायर, दैट इज कंडक्टर, बैटरी फिट की, एंड दिस वाज मैग्नेटिक कंपास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं की जो है ओपन है, तो मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन उसने स्टिल रख दी, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास है. जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की क्लोज की, करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो होने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास थी, इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो गई. और मैग्नेटिक कंपास की निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब मैग्नेटिज्म होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास होती है. तो दिस वॉज परफॉर्म्ड बाय 2-3 times, एंड देन ही केम इनटू द कंक्लूजन that whenever electricity pass through the conductor, magnetism is produced. Now, what is magnetic field and field lines? What is magnetic field? Field is area. So the region around the magnet where force of attraction and repulsion can be detected. For example, हम मैग्नेट से कोई भी आयरन फिलिंग्स को सपोज अट्रैक्ट करते, तो वी आर नॉट सपोज कि हम आयरन फिलिंग्स को बिल्कुल मैग्नेट के कांटेक्ट में लाएं. थोड़ा सा मैग्नेट दूर होता है, तब भी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक जो आयरन फिलिंग्स हैं, दे स्टार्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट. दैट मीन्स कि मैग्नेट थोड़ा सा दूर है, पर उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके आसपास के एरिया में है. So this region is called magnetic field. So scientifically we will write the region around the magnet where force of attraction or repulsion can be detected, or we can say the region around the magnet where magnetism can be felt. Both definition are correct, is called magnetic field. अब how can we detect magnetic field? So to detect magnetic field we need a compass. So by using magnetic compass we can detect the presence as well as direction of magnetic field. Now third topic is magnetic field lines. What are magnetic field lines? So we have studied that magnetic field is an area around the magnet. So how does this area created? This area is created by magnetic field lines. So magnetic field lines are the path around the magnet along which the north pole of the magnetic compass needle tends to move. For example, हमने देखा है कि हमने पीछे क्या देखा है कि जैसे ये मैग्नेटिक कंपास, आप देखो कि इन मैग्नेटिक कंपास की जो है ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है.
ये डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? बिकॉज इस मैग्नेटिक कंपास के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे डिटेक्ट हुई? मैग्नेटिक कंपास से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट is formed by the lines, and these lines are called magnetic field lines. Up, how can we practically in school, how can we prove that there are something magnetic field? तो see this figure, ये figure देखिए, इसमें क्या है कि this is bar magnet and these are the iron fillings. So if you keep the bar magnet on the paper, यू टेक अ शीट ऑफ A4 साइज शीट आपने ली और उसके नीचे आपने एक सेंटर में बार मैग्नेट लगा दिया. नाउ टेक जो आयरन फिलिंग्स एंड ट्राई टू स्प्रिंकल ऑन द पेपर. यू विल सी द आयरन फिलिंग्स दे गेट अरेंज्ड इन दिस वे. व्हाई दे अरेंज्ड इन दिस वे? बिकॉज दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जहाँ जहाँ फील्ड लाइंस हैं वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आयरन फिलिंग्स जो हैं वो स्टिक हो गई. और डायग्रामेटिकली हम इसे शो, यदि हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, तो यू आर नॉट सपोज टू शो देम इन दिस वे. दिस इज द करेक्ट वे. यू हैव टू मेक अ बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, and the line started from north and set south. ठीक है, और आपको एरो दिखाना पड़ेगा कि yes they are moving from north to south. This is the correct way to show the magnetic field around the bar magnet. Now what are characteristics of magnetic field lines? ये जो magnetic field lines हैं, ये जो नॉर्थ से शुरू हुई साउथ तक गई. Next question comes, what are characteristics of magnetic field line? First of all, देखो, आप इस फिगर को देखो और इससे हम जज करते हैं. They start, the magnetic field lines are simple close curve. देखो सब ये close curves में आ रही है. Second, they start from north and ends at south. Third, at poles, poles मतलब ये end point, magnetic field are closer to each other. देखो मिड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर हो जाती है और पोल्स पर ये पास होती है. इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं. हमने जब अपनी जूनियर क्लासेस में मैम ने पढ़ाया था कि मैम ने एक चाइना डिश में आयरन फिलिंग्स के से बार मैग्नेट पास किया था, तो हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स थी वो पोल्स पे, दोनों एंड्स पे अट्रैक्ट हो गई थी. क्यों हो गई थी? बिकॉज मैक्सिमम जो मैग्नेटिज्म है वो पोल पर होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ क्वेश्चन आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती. देखो आप इधर देखो, कोई भी मैग्नेटिक लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया. तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं किया? Because if they intersect, देखो सपोज करो ये मैग्नेटिक लाइन है एक आई और ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन है और ये दूसरी है. सपोज दे इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of magnetic field. First ये direction and second this direction, and two direction of magnetic field cannot be possible. So magnetic lines cannot intersect each other. Now these are the characteristics of magnetic field. Now in this activity 13.4, we will prove the field due to a current carrying conductor. In this activity we take two circuit diagram. We take two circuits. Only the difference between the circuit is the direction of current. In this, a straight copper wire is placed parallel to or over the magnetic compass. The current is switched on. We will see if current flows from north to south direction,
then deflection is towards east. And if current flows from south to north direction, the deflection is towards west. So this is snow rule. What is snow rule? SN means, snow means SNOW. Snow rules means SN से हुआ कि when direction of current is from south to north, तो OW से आ गया deflection is towards west. तो अब इसका opposite हो गया कि if direction is from north to south, deflection is towards east. Now comes right hand thumb rule. Right hand thumb rule is basically gives us the direction of magnetic field around a conductor. Whenever electricity flows through a conductor, so according to direction of electric current, we can easily detect the direction of magnetic field using this rule. This is also known as Maxwell right hand thumb rule. It states that if current carrying conductor is held in the right hand such that the thumb point towards the direction of current, then the fingers wrapped around the conductor show the direction of magnetic field. So, if current goes from downward to upward, then it is anti-clockwise. If it goes from upward to downward, then it is clockwise. So, in this way, we can easily find the direction of magnetic field. Now comes magnetic field due to a current carrying circular loop. So, आपका जो NCERT में diagram है circular loop का, it is quite difficult and this is very important diagram which usually comes in the board exam. So, you can draw in this way also. This is also absolutely correct diagram. So, what is this? In this, there is a circular loop. This is the loop which is connected to battery and current flows in this circular loop. So, when current flows from the circular loop, how can it be represented? It can be represented by concentric circle. Concentric circle means कि एक circle उसके अंदर दूसरा circle. This is concentric circle. Circle become larger and larger when we move away. Every point on the wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as straight line at the center of loop. The direction of magnetic field inside the loop is always same. Now, how can we draw the magnetic lines? देखिए, इसमें आप circular loop बनाया और this is straight line. Now, this behaves like a straight conductor and this behaves like a straight conductor. Now, current is going in this direction and then comes in this direction. So, when current goes from downward to upward, then it is anti-clockwise, and here it is coming from upward to downward, then here it becomes clockwise. So, in this way, the direction of magnetic field can be easily mentioned. Now, question comes, what are the factors on which magnetic field around a circular current or a straight conductor, current carrying conductor depends? Magnetic field is directly proportional to current passing through the conductor. Magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor. Magnetic field is directly proportional to number of turns of coil. Means more the turns of coil,
more would be the magnetic field. Magnetic field is additive in nature. This is its nature. यदि क्वेश्चन आता है what is nature of magnetic field, तो magnetic field is additive in nature. That is, magnetic field of one loop adds up to magnetic field of another loop. This is because the current in each circular turn has some direction. Now comes solenoid. This is solenoid. What is this solenoid mean? So what is this solenoid? Solenoid is this is solenoid, this is solenoid. So how can we define solenoid? The solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the cylindrical form. So this is insulated copper wire. This is insulated copper wire जो एक सर्कुलर टर्न्स में सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज है और इसके दोनों एंड एक बैटरी से कनेक्टेड है. तो दिस इज सोलिनॉइड. सोलिनॉइड, it is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. When current passes through it, its one end behaves like North Pole and other end behaves like South Pole. So how can we come to know कि which one is North Pole and which one is South Pole? So देखो, जिस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, ठीक है, इट इज साउथ पोल, एंड जहां से करंट वापस आता है, दिस इज नॉर्थ पोल. अब जैसा हमने मैग्नेटिक लाइंस इन बार मैग्नेट पढ़ा था, सिमिलरली इसमें भी वैसे ही डायरेक्शन बनेंगे, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो यहाँ से जब करंट साउथ से गया और नॉर्थ से वापस आया, तो direction of magnetic field will be north to south, and inside it is from south to north. The magnetic field of solenoid is totally similar to that of bar magnet. It is uniform inside the solenoid. Uniform means बिल्कुल same है, because आप देखो कि यहाँ पे बिल्कुल parallel lines है, they are totally uniform. Now direction of magnetic field. If it is outside, north to south, and inside it is south to north. Now comes what are the uses of solenoid. The solenoid is used to magnetize a magnetic material like soft iron. If we use soft iron inside the solenoid, it can be converted into electromagnet. Now question come, very important question, कि how can we increase or decrease the strength of solenoid. या बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि on what factors strength of solenoid depend. The strength of solenoid depends on the number of turns of coil, amount of current, more the current, more the strength of solenoid, less the current, less the strength. And third, by taking soft iron inside the coil, and then it becomes an electromagnet. Now, electromagnet. So, when a soft iron core is put inside the solenoid, it converts into an electromagnet. A strong magnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, and this is called electromagnet. Now, what is difference between the electromagnet and permanent magnet? Electromagnet is, this is electromagnet, this is solenoid and this is soft iron core. And this is electromagnet, and how it is differ from permanent magnet.
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैग्नेटिज्म उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी. और यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो नो इलेक्ट्रोमैग्नेट, नो मैग्नेटिज्म वुड बी देयर. वेयर एज परमानेंट मैग्नेट is permanent. It cannot be demagnetized. Strength of electromagnet can be increased or decreased because strength of electromagnet depends on electric current. Whereas permanent magnet की strength fix होती है. Polarity of electromagnet can be changed. What is polarity? Polarity means direction. इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना है? मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से. इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया सेल से या बैटरी से. अब यदि हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएगा. वेयर एज परमानेंट मैग्नेट के पोल्स चेंज नहीं होते. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वेयर एज परमानेंट मैग्नेट इज वीक मैग्नेट. तो आई होप you understand this topic. That is the difference between electromagnet and permanent magnet.